Today I am going to start our next chapter, the anatomy. Chapter 4 and written by Paul Asberg. In this chapter, it's very long chapter and important of class 12. Also, here I have lots of questions come in these chapters. First of all, we will see main characters. Dr. Sadowski. He was a specialist doctor and surgeons, and they were belonged as Japan. His wife Anna, Tom as the American prisoners, and the general and servants. Servants have Porthy, Yuri, and lots of have. So, in this chapter about prisoners, Tom, they were belong to American prisoners, especially according in this chapter. It's time of World War times. Finally, they have letter and they come to reach the where in Japan. So let's continue the chapter. Dr. Sadowski house was built on the spot of the Japanese coast, whereas a little boy he had often played. Dr. Sadowski, and he was lived in Japan, as Japan, because his house was built on the spot of Japanese coast. उनका जो हाउस था वो जापान के बीच के एकदम पास में ही था. And whereas a little boy he had often played. In this time, talking about Dr. Sadowski, when he was a child, so he was every time played on that play. अब वो हमेशा जब वो छोटे थे तो वो क्या करते थे, हमेशा उस प्लेस पे खेलते रहते थे. The low square stone house was set upon the rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. There have trees of pines. Every time he was busy on that place. Always he was climbing the pine tree. When he was climbing for coconuts, always Sadow's father, he was reached to place and he came down with his son. हमेशा क्या करते थे डॉक्टर सैडो उस बीच के पास ही रहते थे. हमेशा वो जब पाइन ट्रीज पे चढ़ जाता तो कभी वो कोकोनट के ट्री पे कोकोनट्स को ग्रो करने के लिए हमेशा चढ़ा ही रहता है. जब भी उसके फादर्स क्या करते थे, अक्सर उनको उस आइलैंड से हमेशा लेकर आते थे. When his fathers known about this and he was known about his the future, because Dr. Sadowski was the future of Japan. उनको पता था कि वो जापान का क्या है future. Finally, Dr. Sadowski's father was decided he would be sent other country. So Sadowski had taken this into his mind as a deed everything his father said. When his father everything told to his son and he was accept his father's order. When he was do anything else, so definitely he can do. अब वो जो भी चीजें बोलता था वो क्या करता था, उनके फादर्स की बातों को वो बहुत अच्छे से मानता था. जो भी चीजें उनको कहा जाता था वो उनको एक्सेप्ट करता था. Because when his father knew that his education to his father's chief concern, when he was known about his Dr. Sadowski's education, finally he was very serious about Sadowski's education. उनके जो फादर थे उनके एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था. That's because he was the decided when Dr. Sadowski was 22 years old. That time he sent to America for education, and especially that education was as become a surgeon and medicine. अब क्या करते हैं, जब वो 22 years old था तो उनके फादर से उसको डिसाइड कर लेता है कि उनको अमेरिका भेज देगा. Why? Because of as become a surgeon और and medicine. उस सर्जन और मेडिसिन के लिए वो क्या कर देता है, उसको अमेरिका भेज देता है. After 8 years, when he was 30 years old, so he came back to his
country. But in this time, when he was not only surgeon and medicines, when he was came back, he also as a famous surgeon with scientist. अब जब वो 8 years later, जब वो 30 years में आता है अपनी कंट्री, तो वो सिर्फ एक फेमस सर्जन ही नहीं था, बल्कि वो एक साइंटिस्ट भी बन चुका था. Because he has perfected a discovery which would render wounds entirely clean. Now, every time he was discovered about medicines, how they will be clean the wounds. Wound is injured place. They have start to injury and start to cleaning them. इंजर्स क्या होता है? wounds, जो घाव को जिसको बोलते हैं, उसको कैसे क्लीन किया जाता है, इसकी में इंटायर क्या करता है? डिस्कवरी करता है. And that's because he was the famous surgeon and scientist also. There was some slight danger that the old general might need an operation for conditions for which he was also being treated medically, and for this possibility Sado was being kept in Japan. Once upon a time, here have one general. This general, he have a critical situations on that time. Finally, he saved his life, and that's because in these times he was a main doctor and main surgeon in the Japan. अब क्या था? उन्होंने एक जो जनरल थे उनकी लाइफ को सेव किया, और लाइफ को सेव करने के साथ साथ वो अब जापान का एक फेमस डॉक्टर हो गया था. Clouds were rising on the ocean side because in the last few days was very warm on that place. Suddenly, Dr. Sado's wife Hannah, she was waiting with her 2 children, with her husband. Now, that was the very heavy and the fog from the cold waves. Sarah watched Mr. Hyde outlines of a little island near and shore, and then come creeping up. तभी क्या करते रहते हैं, जब क्लॉज वहाँ पे आ जाता है, सडनली क्या करने लगती है हैना, जो कि उसमें लेसन्स में क्वेश्चंस होता है. अनएक्सपेक्टेड वार्म ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से गर्मी थी, लेकिन अचानक से क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा हैवी फॉग्स आने लगते हैं, जो क्या होता है कोल्ड वेव्स होता है वो चलने लगते हैं. सैडो उन चीज़ों को मिस्ट को वॉच करता रहता है, जो फॉग्स होते हैं. तभी उनको क्या लगता है कि कुछ पर्सन आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस. उनको लगता है कि वहाँ से कोई पर्सन जो क्रीपिंग्स करते हुए वो कोई आ रहा है. तो होता है ब्रीचिंग अराउंड द पाइन्स एंड फ्यू मिनट्स फॉग wrapped about the house. और वही कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद ही वो जो फॉग का मिस्ट था उनके घर तक आ जाता है. मीन्स दे विल बी ग्रो अप. धीरे धीरे वो जो मिस्ट है लगातार बढ़ते ही जा रहा था. ही वेटिंग हिज 2 चिल्ड्रन. हैना क्या करती है, अपने दोनों बच्चों के साथ, जो कि सैडो की वाइफ, वो अपने बच्चों के साथ उनके हस्बैंड का वेट करती रहती है. बट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट द डार्क ब्लू वुलन हेरोइक ओवर हर किमोनो, जो जापानीज ड्रेसेस है किमोनो, वो पहनी हुई क्या करती रहती है, वो अपने हस्बैंड का वेट्स करती रहती है. तभी वो देखती है एज अ अफेक्शनली, एज अ लव से देखती है. बिकॉज when as the American times, when he was Sado was 22 years old, he reached America for education. After that, Hannah and Sado first time went in America. Both were Japanese, but when they did for a surgeon, after that he was met first time with Hannah in professor's house. They have teachers. After that, both have fell in love. Finally, his father have decided he never received if Hannah will be not as Japanese. अब क्या था, उनका सबसे पहला मुलाकात वो कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में. जब वो लोग सर्जन्स बनने के लिए वो अमेरिका गया था, तब हैना की मुलाकात, हैना और सैडो की मुलाकात
उनके प्रोफेसर के घर पे होती है। जब वो फर्स्ट टाइम हैना को देखता है तो उन दोनों में लव हो जाता है, बट उनकी जो फादर्स, सैडो के फादर्स, वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो जापानीज नहीं होती। लेकिन इज गुड लक फॉर है बिकॉज हैना वाज जापानीज already her parents have sent her for the treatment of doctors, that's cause they have meet them। अब दोनों क्या होता है, वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है। उनके फादर्स, उनके पेरेंट्स ने भी उनको सर्जरी के लिए ही क्या किया था, डॉक्टर्स के लिए उनको भेजा गया था। The students as the board accepted the kindness, Sejo had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house and that night and the rooms were so small। अब क्या करने लगते, सैडो बताने लगते हैं कि वो अक्सर हैना से कहते थे कि वो जो प्रोफेसर के हाउस में वो बहुत ज़्यादा बोर होते थे क्योंकि उनका हाउस बहुत छोटा सा था। द फूड वॉज सो बैड, खाना भी बहुत ख़राब थे। प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड द हैना। प्रोफेसर्स की वाइफ उनके लिए बहुत वैल्यूबल थी, लेकिन सबसे अच्छा उनके लिए लाइफ में ये था कि उनकी मुलाकात हैना से प्रोफेसर्स के घर में ही हुआ था। एंड ही फेल्ट वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उससे उनको क्या हो जाता है